이 새 언약이 무엇을 의미하는지, 왜 예수의 피가 필요했는지, 그리고 이 피가 우리에게 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다. 아멘. 파이브, 새 언약이란 무엇인가? 성경에서 언약은 하나님과 사람 사이의 약속을 의미합니다. 아멘. 구약 시대에는 하나님께서 이스라엘 백성과 여러 언약을 맺으셨습니다. 아멘. 그러나 그 언약은 사람의 죄와 연합함 때문에 완전하지 않았습니다. 아멘. 구약의 언약은 동물의 피로 이루어졌고 그 피는 단지 죄를 덮는 역할을 했을 뿐 사람을 완전히 깨끗하게 할 수는 없었습니다. 아멘. 아멘. 그래서 예수님은 새 언약을 세우셨습니다. 통역을 따라서 예수님은 새 언약을 세우셨다 3번 선포하세요. 아멘, 아멘, 아멘. 이 새 언약은 예수의 피로 세워졌고 그것은 우리의 죄를 영원히 사해 줍니다. 아멘. 예수의 피는 우리 죄를 영원히 사해주고 하나님과 온전한 관계를 회복해주는 놀라운 언약입니다. 예수의 피가 새 언약의 피인 이유입니다. 아멘. 우리도 오픈 바이블 누가복음 22장 20절을 읽어주세요. 예수님께서 제자들에게 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이라고 말씀하셨습니다. 아멘. 통역을 따라서 예수 피로 세우는 새 언약이다 3번 선포하세요. 아멘, 아멘, 아멘. 예수의 피는 단순히 우리의 죄를 덮는 것이 아니라 우리 죄를 깨끗이 씻어줍니다. 아멘. 우리 죄를 깨끗하게 씻어주고 하나님과 관계를 새롭게 만듭니다. 아멘. 이는 구약의 희생 제사와 다른 점입니다. 아멘.
예수의 피는 완전한 구속을 이루는 능력을 가지고 있습니다. 아멘. 예수님의 능력의 피로 우리는 하나님과 새롭고 영원한 언약을 맺게 됩니다. 아멘. यीशु के खून की ताकत के जरिए हम खुदा के साथ एक और अपनी अहद में दाखिल होते हैं। आमीन आमीन। 우리도 오픈 바이블 히브리서 9장 15절을 읽어주세요. उर्दू बाइबल में इब्रानियों उसका 9वां बाब और 15वीं आयत। इब्रानियों 9वां बाब 15वीं आयत। 아멘. 예수님은 새 언약의 중보자이십니다. यीशु नए अहद का वसीला है। आमीन। 예수님의 피는 우리의 죄를 속량하기 위해 흘려 주셨습니다. यीशु का खून हमारे गुनाहों के कफारा के लिए बहाया गया है। आमीन। 그 피를 통해 우리는 영원한 생명의 약속을 받았습니다. इस खून के जरिए हमें अपनी जिंदगी का वादा हासिल होता है। 우리도 오픈 바이블 마태복음 26장 28절을 읽어주세요. मत्ती उसका 26वां बाब और 28वीं आयत। मत्ती 26वां बाब 28वीं आयत। क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो हत्यारों के लिए गुनाहों की माफी के लिए वास्ते बहाया जाता है। आमीन। 예수의 피는 제3을 위한 언약의 피입니다. 아멘. आमीन। यीशु का खून गुनाहों की माफी के अहद का खून है। आमीन आमीन। 이 피는 많은 사람을 위한 구원의 피입니다. ये खून बहुत से लोगों के लिए निजात का खून है। 예수의 피는 하나님의 구원의 약속을 이루는 능력입니다. यीशु का खून वो ताकत है जो खुदा के निजात के वादा को पूरा करता है। आमीन आमीन। 새 언약의 특성, 새 언약은 두 가지 중요한 특징을 가지고 있습니다. 아멘. नए अहद की खसूसियात नए अहद के दो अहम खसूसियात हैं कि दो अहम खसूसियात हैं। आमीन आमीन। 하나님의 은혜로 주어진 구속인 새 언약은 우리가 무엇인가를 성취해서 얻는 것이 아닙니다. खुदा के फजल से दिए गया छुटकारे का नया अहद कोई हासिल करने की चीज नहीं है। आमीन आमीन। 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 구속입니다. ये वो छुटकारा है जो खुदा ने हमें मेहरबानी से दिया है। आमीन आमीन। 예수의 피는 우리가 받을 자격이 없는 은혜로 우리에게 주어진 선물입니다. 아멘. यीशु का खून एक तोहफा है जो हमें फजल से दिया गया जिसके हम हकदार नहीं हैं। आमीन आमीन। 내가 너희를 위해 붙는 것이라고 하신 예수님의 말씀처럼 이 언약은 하나님의 사랑과 자비에서 시작된 것입니다. 아멘. जैसा कि ये मेरा अहद का खून है जो बथेरों के लिए बहाया गया। ये अहद खुदा की मोहब्बत और रहमत से शुरू हुआ है। आमीन। 영원한 관계의 회복인 새 언약은 단기적 것이 아닙니다. 예수님의 피는 우리가 하나님과 영원히 관계를 맺을 수 있는 기초가 됩니다. 아멘. आमीन। नया अहद आरजी नहीं, यीशु का खून हमारे लिए खुदा के अपनी ताल्लुक रखने की बुनियाद बन जाता है। आमीन आमीन। 우리도 오픈 바이블 히브리서 10장 19절과 20절을 읽어주세요. इब्रानियों उसका 10वां बाब 19वीं और 20वीं आयत। इब्रानियों 10वां बाब
10वां बाब। 예수님의 피는 새롭고 산 길을 열어주셨습니다. आमीन। यीशु के खून ने एक नई और जिंदा राह खोली। 예수의 피는 하나님 앞으로 나아가는 길입니다. यीशु का खून खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। आमीन। आमीन। 우리는 담대하게 하나님을 만날 수 있습니다. हम दिलेरी से खुदा से मिल सकते हैं। आमीन। आमीन। 히브리어 말씀처럼 우리는 예수의 피로 담대히 성소에 들어갈 수 있다는 것입니다. जैसा कि इब्रानियों में कहा गया, हम यीशु के खून से दिलेरी से पाक मकाम में दाखिल हो सकते हैं। आमीन। आमीन। 통역을 따라서 우리는 예수 피로 담대히 성소에 들어갈 수 있다 3번 선포해 주세요. मेरे पीछे 3 दफा बोलना है। हम दिलेरी से यीशु के खून से मुकद्दस मुकाम में दाखिल हो सकते हैं। हम दिलेरी से यीशु के खून से मुकद्दस मुकाम में दाखिल हो सकते हैं। हम दिलेरी से यीशु के खून से मुकद्दस मुकाम में दाखिल हो सकते हैं। हम दिलेरी से यीशु के खून से मुकद्दस मुकाम में दाखिल हो सकते हैं। आमीन। 아멘, 아멘, 아멘. 예수의 피로 우리는 하나님과 영원한 교제를 경험할 수 있습니다. 아멘. यीशु के खून के जरिए हम खुदा के साथ अपनी रफाकत का तजर्बा रख सकते हैं। आमीन। आमीन। 예수의 피는 우리를 새 언약의 일꾼으로 만듭니다. 아멘. यीशु का खून हमें नए अहद का गुलाम यीशु का खून नए अहद के गुलाम बनाता है। आमीन। आमीन। 우리도 오픈 바이블 고린도후서 3장 6절을 읽어주세요. दूसरा ग्रंथियों उसका 3रा बाब और 6ठी आयत। दूसरा ग्रंथियों जिसने हमको नए अहद के स्वाधीन होने के लायक भी किया, तो लफ्जों के स्वाधीन नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। आमीन। आमीन। 우리는 예수의 피로 세워진 새 언약을 전하는 사명을 받았습니다. 아멘. हमें यीशु के खून से कायम करदा नए अहद का ऐलान करने का मिशन हासिल हुआ है। आमीन। आमीन। 우리는 이제 새 언약의 증인으로서 예수님의 피를 전하는 사명을 받았습니다. 할렐루야. हम नए अहद के गवाह हैं। हम यीशु के खून का ऐलान करने का मिशन मिला है। आमीन। आमीन। 우리는 새 언약을 전하는 자가 되어야 합니다. हमें नए अहदनामे के पैगाम रेसाम बनना चाहिए। आमीन। आमीन। 통역을 따라서 예수의 피로 새 언약이 완성되었다 3번 선포하세요. मेरे पीछे 3 दफा कहना है, नया अहद यीशु के खून से पूरा हुआ है। नया अहद यीशु के खून से पूरा हुआ है। नया अहद यीशु के खून से पूरा हुआ है। नया अहद यीशु के खून से पूरा हुआ है। नया अहद यीशु के खून से पूरा हुआ है। नया अहद यीशु के खून से पूरा हुआ है। यीशु के खून से पूरा हुआ है। आमीन। 아멘, 아멘, 아멘. 우리도 오픈 바이블 사도행전 20장 28절을 읽어주세요. अमाल उसका 20वां बाब और 28वीं आयत। अमाल 20वां बाब 28वीं आयत। बस तकबी और इस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूह कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया।
ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो, जिसे उसने पास अपने खून से मोल लिया है। आमीन। आमीन। 하나님의 피라는 놀라운 선언, 하나님이 자기 피로 사신 교회라고 말씀합니다. 아멘. इसमें खुदा के खून का हैरत अंगेज ऐलान किया गया है। वो कलीसिया जिसे खुदा ने अपने खून से खरीदा था। आमीन। 하나님은 영이시며 본래 피가 없으십니다. 아멘. खुदा रूह है और असल में उसका कोई खून नहीं है। आमीन। आमीन। 그런데 피로 교회를 샀다고 말합니다. 아멘. लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने चर्च को खून से खरीदा था। 아멘. 아멘. आमीन। 세븐, 이것은 아멘. 곧 예수의 피가 곧 하나님의 피라는 뜻입니다. 아멘. इसका मतलब ये है कि यीशु का खून दर हकीकत खुदा का खून है। आमीन। आमीन। 예수님의 신성과 인성, 예수님은 참 하나님이시며 동시에 참 사람이십니다. यीशु की अलूहियत और इंसानियत यीशु हकीकी खुदा है और साथ ही हकीकी इंसान भी। आमीन। 예수님의 피는 단지 사람의 피가 아니라 성육신하신 하나님의 피입니다. 아멘. यीशु का खून सिर्फ इंसान का खून नहीं बल्कि खुदा के खून का तजस्सुमे इलाही है। आमीन। आमीन। 통역을 따라서 예수의 피는 성육신하신 하나님의 피다. 3번 선포해 주세요. मेरे पीछे 3 दफा बोलना है। यीशु का खून तजस्सुमे इलाही खून 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 है। आमीन। 아멘, 아멘, 아멘. 그래서 그 피는 완전한 구속, 완전한 속죄, 영원한 생명을 줍니다. 아멘. ताकि खून मुकम्मल छुटकारा, मुकम्मल कफारा और अब्दी जिंदगी अता करे। आमीन। आमीन। 예수의 피로 사신 교회는 조직이 아니라 하나님의 피로 값주고 산 공동체입니다. 아멘. कलीसिया कोई तंजीम नहीं बल्कि खुदा के खून से खरीदी गई जमात है। आमीन। आमीन। 사랑하는 여러분, 우리가 교회를 어떻게 대해야 할지 알기를 원합니다. 아멘. अजीजों, ये हमें सिखाता है कि हमें चर्च के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। 교회는 그리스도의 생명으로 태어난 거룩한 존재입니다. कलीसिया मसीह की जिंदगी से पैदा होने वाली मुकद्दस हस्ती है। आमीन। आमीन। 예수의 피는 생명력 있는 능력입니다. यीशु का खून जिंदगी देने वाली ताकत है। आमीन। आमीन। 예수의 피는 우리를 죄에서 구속하고 마귀를 이기게 합니다. यीशु का खून हमें गुनाह से छुटकारा देता है और हमें शैतान पर काबू पाने की ताकत देता है। आमीन। आमीन। 하나님과 화목하게 하고 우리의 양심을 깨끗하게 씻어줍니다. हम खुदा के साथ सुलह करते और अपने ज़मीर को पाक करते हैं। आमीन। आमीन। 예수께서 천하보다 귀한 우리에게 영원한 생명을 얻게 합니다. यीशु हमें अब्दी जिंदगी देता है जो पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती है। आमीन। आमीन। 예수 피 곧 하나님의 피를 믿으시길 축복합니다. आपको यीशु के खून पर यकीन करने की बरकत मिले। आमीन। आमीन। 사도행전 20장 28절은 예수님이 단순한 사람이 아니라 피 흘리신 하나님이심을 선포합니다. 아멘. अमाल 20:28 में यीशु सिर्फ एक सादा आदमी नहीं बल्कि खुदा है जिसने अपना खून बहाया। आमीन।
이 피를 믿는 자는 제사함을 받고 하나님의 자녀가 되며 영원한 생명을 얻습니다. 아멘. जो लोग उस खून पर ईमान रखते हैं, गुनाहों की माफी हासिल करते हैं, खुदा के बच्चे बन जाते हैं और अपनी जिंदगी हासिल करते हैं। आमीन। 사랑하는 여러분, 하나님의 생명이 예수 피 속에 있습니다. 아멘. अजीजों, खुदा की जिंदगी यीशु के खून में है। आमीन। 예수의 피는 새 언약의 피입니다. 아멘. यीशु का खून नए अहद का खून है। आमीन। आमीन। 이 피는 죄를 씻고 생명을 주고 은혜를 베푸는 능력입니다. ये खून गुनाहों को धोने, जिंदगी देने और फजल देने की ताकत रखता है। आमीन। 이 피를 믿는 자는 결코 정죄함이 없습니다. जो भी इस खून पर यकीन रखता है, उसकी कभी नदामत नहीं की जाएगी। आमीन। आमीन। 구약의 옛 언약은 불완전했지만 하나님의 생명은 예수의 피로 완전한 새 언약이 이루어졌습니다. 아멘. पुराने अहद का पुराना अहदनामा नामुकम्मल था, लेकिन एक कामिल नया अहद यीशु के खून के जरिया से कायम किया गया, जो खुदा की जिंदगी है। आमीन। आमीन। 예수의 피는 죄를 완전히 용서하고 하나님의 관계를 회복시키며 영원한 생명을 보장합니다. 아멘. यीशु का खून गुनाहों को मुकम्मल तौर पर माफ करता है, खुदा के साथ ताल्लुकात को बहाल करता है और अपनी जिंदगी की जमानत देता है। आमीन। आमीन। 예수의 피를 믿는 자는 새 언약이 백성이 되어 하나님과 친밀한 관계로 맺고 살아갑니다. 아멘. जो लोग यीशु के खून पर यकीन रखते हैं, वो नए अहद के लोग बन जाते हैं और खुदा के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं। आमीन। आमीन। 우리는 예수의 피로 맺어진 새 언약을 전하며 살아야 합니다. 아멘. हमें यीशु के खून से अहद कायम करने का ऐलान करना चाहिए। आमीन। आमीन। 예수의 피로 맺어진 새 언약을 믿고 감사해야 합니다. 아멘. हमें यीशु के खून के जरिए कायम किए गए नए अहद पर यकीन करना चाहिए और उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आमीन। आमीन। 예수의 피를 전하는 새 언약의 일꾼이 되어야 합니다. हमें नए अहद का रुकन बनना चाहिए और यीशु के खून का ऐलान करना चाहिए। आमीन। आमीन। 새 언약의 실천적인 의미는 예수의 피로 맺어진 새 언약은 단순히 하나의 이론이 아니라 우리 삶의 실천적인 변화를 가져온다는 것입니다. 아멘. यीशु के खून से कायम किया गया नया अहद महज एक नजरिया नहीं, बल्कि हमारी जिंदगियों में ठोस तब्दीली लाता है। आमीन। आमीन। 우리가 예수님의 새로운 언약을 따라 살 때 우리는 다음과 같은 변화를 경험합니다. 아멘. जब हम यीशु के खून के जरिए कायम करदा अहद के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो हमें नई तब्दीलियों का तजर्बा करते हैं। आमीन। 제사함의 확신, 예수의 피는 우리의 죄를 완전히 사하고 하나님 앞에 정결하게 만듭니다. 아멘. यीशु का खून हमारे गुनाहों को मुकम्मल तौर पर माफ करता है और खुदा के सामने पाक करता है। आमीन। 이 피로 우리는 하나님의 관계가 끊어지지 않고 언제든지 하나님 앞에 나아갈 수 있습니다. 아멘. इस खून के जरिए हम खुदा के साथ नए रिश्ते से अलग नहीं हुए, बल्कि किसी भी वक्त उसके पास जा सकते हैं। आमीन। 새로운 삶의 시작입니다. 새 언약은 우리를 새로운 피조물로 변화시킵니다. 아멘. नई जिंदगी का अहद नए अहद में हमें नई तहकीकों में बदल देता है। आमीन। आमीन। 예수의 피가 우리 삶을 변화시키고 하나님을 향한 새로운 길을 열어줍니다. 아멘. यीशु के खून ने हमारी जिंदगियों को तब्दील कर दिया और खुदा की तरफ एक नया रास्ता खोल दिया। आमीन।
Amen. 예수의 피는 단순히 고통과 죽음의 상징이 아닙니다. यीशु का खून महज दुख और मौत की अलामत नहीं है। आमीन। Amen. 그것은 새로운 피로 우리의 구속과 하나님과의 영원한 관계 회복을 하는 의미입니다. 아멘. ये नए अहद के खून हमारे छुटकारे और खुदा के साथ हमारे अबदी ताल्लुकात को बहाल करता है। आमीन। 아멘. 우리는 예수의 피를 믿고 받아들임으로써 예수님과의 새롭고 영원한 관계를 누릴 수 있습니다. 아멘. यीशु के खून पर यकीन करने और उसे कबूल करने से हम खुदा के साथ एक नए और अबदी रिश्ते से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। आमीन। Amen. 이제 우리는 예수의 피를 의지하며 그 피가 우리에게 주는 은혜와 능력을 경험하고 그 피로 맺어진 새 언약 안에서 살아가야 합니다. 아멘. अब हमें यीशु के खून पर भरोसा करना चाहिए, उस फजल और ताकत का तजर्बा करना चाहिए जो इस खून के जरिए कायम किए गए हैं और अहद के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। आमीन। Amen. 이 피는 우리에게 구원과 생명을 주었고 그 피는 우리를 하나님과 연결시켜주는 다리입니다. 아멘. इस खून ने हमें निजात और जिंदगी दी है। वो खून जो पुल है जो हमें खुदा से जोड़ता है। आमीन। Amen. 이 놀라운 진리를 기억하고 예수의 피로 맺어진 새 언약을 마음에 새기며 그 사랑을 다른 이들에게 전하는 삶을 살아가기를 축복합니다. 아멘. इस हैरत अंगेज सच्चाई को याद रखें और खुदा के खून से मोहरबंद अहद को अपने दिल में बांध लें और ऐसी जिंदगी गुजारें जो दूसरों से मोहब्बत फैलाए। आमीन। 아멘. 사랑하는 여러분, 다 같이 기도하겠습니다. हालेलुया। अजीजों, आए हम दुआ करें। 성령 하나님, 오늘 하나님의 말씀을 입으로 시인하며 선포하신 모두에게 어렵고 힘든 가운데 있다 하더라도 영혼의 샘을 얻을 수 있는 하나님의 음성으로 들려지기를 간구드립니다. रूह कुद्दुस मैं दुआ गो हूँ कि जो लोग आज मुश्किलों और आजमाइशों का सामना कर रहे हैं वो खुदा के कलाम को अपने मुंह से इकरार करते हुए इसका ऐलान करते हुए अपनी रूहों को नई ताकत हासिल करने में खुदा की आवाज सुने। 통역으로 수고하시고 성경 읽기로 함께 하신 모든 분들의 삶 속에 하나님의 사랑이 영원히 함께 하시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. मैं बरकत देती हूँ और दुआ करती हूँ कि खुदा की मोहब्बत उन तमाम लोगों की जिंदगियों के साथ जिन्होंने तशरीह करने में सख्त मेहनत की और हमारे खुदावंद यीशु के नाम पर बाइबल पढ़ने में हिस्सा लिया, मसीह यीशु के नाम से। 아멘. 할렐루야. 양성인 목사님과 서류를 찾으시기 바랍니다. 웰컴 코리아 양성인 파스터 할렐루야. Yeah, hallelujah. Nice to meet you. God bless you. Yeah, hallelujah. You are ready? Yes, we are ready. Okay. Hallelujah. Nice to meet you. I am Pastor Yang Songmin. The message of God will express the spirit of the Trinity God and spirit of gospel of kingdom of God. हालेलुया। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं पादरी सॉन्गमिन हूँ जो तसलीस के राज और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता हूँ। Today I will preach the word that the merchant seeking precious pearl is God the Father who will come to possess the new Jerusalem. आज मैं इस